was taken out. This was 13th of December. 13th of December. Question paper taken out, as a result of which the question paper got circulated. List which started. The citation was also directed with that assertion. The question paper got leaked and it got circulated to various centers. And therefore, purity of the selection test has been compromised and a fresh selection test is required. This is the crux, my lordships, of. This is the argument. This is argument, in fact. Later on, they have expanded to include that certain questions are wrong. So the argument has two facets. One, whether question paper leaked having a selection test confined to one center where selection process got disrupted would suffice. And the second limb is regarding, my lordships, wrong question or wrong model answers. So it is in two compartments. I will be answering one by one, my lordships. Now, certain figures should be relevant. ये उसका दियो तुम. Yeah. There were admit cards were issued, my lord, to 4,80,359 applicants. 4 lakhs. Admit card was put on 4,48,470 only downloaded it. Yes. Total applicants who appeared are 3,23,000. 23 लिखे होते. ये होते हैं. ये भी गलत है. This was, my lord, on 13/12. In Bapu Sabhagar, there were 912 centers across 36 districts of the state of Bihar. Total centers across 912. Yes. Including Bapu Sabhagar. If Bapu Sabhagar is taken, so 911 centers examination selection test was conducted peacefully on 13/12. So far Bapu Sabhagar is concerned, in Bapu
Sabhagar, total number of appearing candidates नहीं 4 करनी उस दिन total number of appearing candidates Where is this? Bapu Sabhagar, Gandhi Madhan or Gargani Madhan? no Bapu Sabhagar Kankarba Kumra Kumra. it's a big Road. main road. It has capacity of 5,000 applicant candidates. तेरह तारीख को इतने लोग बैठे कितने लोग थे कैंडिडेट Yes. How many candidates were there in Bapu Sabhagar? 12,012 sitting arrangement was made for 12,012. The candidates who appeared was 5,900 and odd. When the examination commenced at 12, Timing of examination was 12 to 1:30. yes, 12 to 1:30 or 2? 2. Those who would have come after 11, even 11.1, they would not be allowed entry. So positively, every applicant has to appear at the center latest by 11. One hour is provided because, my lord, every candidate, not only candidate, every person who is in the center is required to be frisked for any electronic gadget. Whether it is invigilator, whether it is staff, no person capable of transmitting or receiving any message. And this has been scrupulously observed. There has been absolutely, nor there is absolutely any evidence to demonstrate that any candidate or any person got entry or sneaked with any electronic device. Yes. Were installed across all centers with the assistance of Electronic Corporation of India. Total number of members would exceed 13,000 approximately. And this was provided by Electronic Corporation, ECI, Electronic Corporation of India. Every step was taken to ensure that nothing comes in, nothing goes out. Bapu Sabhagar selection test commenced as scheduled at 12. Large number of applicants were writing their examination. At around saying that there has been delay in distribution of question booklet, the authorities handling the process
my lordships, keeping the sensitivity, and in order to ensure that the selection test passes smoothly, even assured those handful of applicants creating ruckus that they would be allowed extra time if there has been delay in providing question booklet. Notwithstanding that, some more pretexts or some more, my lordships, allegations were cooked up. In a selection test of this nature, the number of applicants, my lordships, gradually increased, and it became a sizable number. This was out of 5,000 students writing the exam. Yes, writing the examination. Majority were writing. It was only a minority of the applicants who, my lord, designedly wanted to disrupt the selection test. Their only object was to disrupt it on one or the other pretext. In this process, one government employee suffered injury. He was not being allowed to be taken out to the hospital. He taking away the booklets. They came out of the exam center. District Senior Superintendent of Police, my lord, rushed to the spot to contain any untoward happening, and thus the exam at Bapu Center got disrupted because those applicants who were also writing their exam peacefully, they were prevented, their question booklets were snatched. So it was a sinister design hatched up from before. Some booklets were taken out. It is those booklets which are reportedly being urged to persuade my lords to be convinced that they spread across all other centers. However, there is absolutely no material that the question papers Bpsc has taken all precautionary steps, including ascertaining. How come? I mean, we are absolutely in agreement with the what you say. Every arrangement, but how these batch man people they could come out of the hall with their booklets? They should have stopped. My lordships, it was a difficult situation because if the number in fact, my lordship, district administration reached there, and I mean the visual is there. Applicants fighting, using pickups, snatching. And the ruckus took place inside. It started inside the hall, and later it spread. The same applicants entered other halls. There are different halls. But inside the campus. Outside, their friends were waiting. There are a large number of people who
waiting, and we presumably, and our presumption is not misplaced, that people sponsored by various coaching institutions anywhere. You have the authority to regulate, not the recruiting agency, but the state. My lordship's state. Let me not. We will be asking questions. You continue with your scheme. Now, my lordships, the examination, Bapu Sabha examination center got disrupted, and they took away some of the OMR. Did not reach any other center by any mode. It could not have reached physically for 2 p.m. It did not reach through any electronic mode. In fact, the OMR sheets were thrown out. The question booklet were thrown out. From 105, question reaching other centers, it is impossible from the fact that Bpsc has taken all precautions to avoid any infiltration, and it was foolproof arrangement. Nobody can claim, not a single applicant, nobody can claim, not there is any evidence that any applicant or any person it could not have been possible unless it was physically inside the center. In none of the repetitions, my lord, there is any material to show that the question paper leaked in the sense that it traveled to other centers. Later on, my lordships, by sending some message on Twitter, Instagram, etc., news arises, it is but natural that taking advantage of the situation, many groups, including political groups, which they join in this my lordship's episode, and then they started creating a story that question paper leak, jammer did not. Let me assume jammer did not work. Where is the evidence that he was having a mobile phone or any gadget having a SIM card which could have transmitted or received it? She took a firm stand that we will not cancel the selection test on any other center unless there is material to justify or material to demonstrate and prove that the purity of selection test has been compromised. Reports were called from every center. Bpsc scrutinized it. Bpsc
complaints or, my lord, these messages, and Bpsc took a conscious decision. The entire full commission, my lord, took a conscious decision that this is not a case which will require or which will possibly be taken as a ploy to cancel the entire selection test, and it would suffice to hold a re-selection test at Bapu Sabhagar. Submitted a report to the commission regarding the activities at Bapu examination You center. annexed it in your contract. Yes, yes. Pappu Kumar. Yes. All right. You'll just give the reference later. Bpsc therefore took conscious decision that it is in public interest, in the interest of, my lord, aspiring candidates, that entire selection is not cancelled and it will only be reheld. Fixed on 4th of January 2025. On 4th of January, my lordships, the total number of applicants who appeared, 5943. That is more than the candidates who sat. Less than. No, 5,900 and odd, you said earlier. And this time it was 5,943. 5943. 5943. 5,009. And the first time it was 5,000. Seat plan was for 12,000 and 12. The entire examination all over state, apart from these measures, has been videographed. If the court feels persuaded in any manner, even though there is no material, we can produce videographed selection test any moment. Bapu Sabhagar also having similar video facility. And it is in this context, my friends have taken to the report of district magistrate. My ships, I am tempted to refer it again. Kindly come to the report of the district magistrate. On these grounds, the selection test is tinkered. I am apprehensive that no selection body would be able to conduct any selection test. Disruptors are always there, my lordships. Howsoever stringent measures may be taken. Section C, page 52 of the counter available. Yes. This is the covering letter. Next page, my lord, is detailed exhaustive report.
I'll take little time, my lord, in placing this report because this is the foundation for the commission to take a decision apart from other materials. परीक्षा की तिथि को सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं पुलिस बल ससमय अपने कर्तव्य पर उपस्थित थे। सभी परीक्षार्थियों को भी ससमय शांतिपूर्ण ढंग से प्रवेश करा दिया गया। परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र भी ससमय करीब 10:55 बजे पूर्वाह्न में जोनल प्रश्न पत्र एवं OMR सीट का सील्ड पैकेट उपलब्ध कराया जाने लगा। प्रश्न पत्र वितरण में 10-15 मिनट होने पर कुछ परीक्षार्थी केंद्राधीक्षक एवं वीक्षकों के यह समझने के बावजूद कि विलंब के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा हंगामा कर। परीक्षार्थियों की आपत्ति इस बिंदु पर थी कि उनके कमरे में सील्ड बॉक्स को क्यों नहीं खोला गया। शोरगुल सुनकर अन्य कई कमरों के छात्र भी बाहर निकल आए और बुकलेट एवं उपस्थिति पत्रक छीनकर फाड़ने लगे। उनके द्वारा यह अफवाह भी फैलाई जा रही थी कि परीक्षा रद्द हो गई है, जिस कारण कुछ अन्य परीक्षार्थी भी बाहर आ गए और बुकलेट एवं OMR शीट लेकर परीक्षा केंद्र के बाहर परिसर में एकत्रित हो गए। उन्हीं में से एक परीक्षार्थी ने ट्रक से प्रश्न पत्र का पैकेट लूट लिया और हाथ में लहराते मुंह के साथ तोड़कर बाहर निकल गए। परीक्षार्थियों ने कई कमरों में जाकर उपस्थित पत्रक आदि प्रपत्रों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बावजूद उपस्थित दंडाधिकारी एवं पुलिस बल द्वारा स्थिति को नियंत्रित करते हुए शेष परीक्षा को संपन्न कराया गया। सूचना प्राप्त होते ही जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पटना भी केंद्र पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया, अन्यथा भारी तोड़फोड़ एवं आगे परीक्षा नहीं होने दिया जाता। नियंत्रित परिस्थिति में कुल 5,671 परीक्षार्थी बच्चा को पूरा किया। परीक्षा प्रारंभ होने में विलंब निम्न कारणों से हुआ। चूंकि परीक्षा भूतल के साथ साथ सभी 5 तलों पर आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में परीक्षार्थी भाग ले रहे थे। विधिवत तरीके से प्रश्न पत्र का सील बॉक्स खोलने के पश्चात क्रमवार तरीके से अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाने लगा। प्रत्येक हॉल में 273 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की और प्रत्येक स्टील बॉक्स में 192 प्रश्न पत्र थे, जिसे 16 सील्ड TES बैग टैंपर एविडेंस सिक्योरिटी बैग में रखा गया। प्रत्येक TES बैग में 12 प्रश्न पत्र थे, अतः एक अभ्यर्थियों को बांटा जा सके। TES बैग को एक हॉल से दूसरे हॉल में ले जाने तथा क्रमबद्ध रूप से प्रश्न पत्र वितरित करते हुए ऊपर तक पहुंचने में विलंब हुआ। परीक्षार्थियों द्वारा उनके ही कमरे में सील्ड बॉक्स नहीं खोले जाने पर आपत्ति की जाने लगी तथा प्रश्न पत्र वितरण को बाधित किया गया। यद्यपि केंद्राधीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि सील्ड बॉक्स किसी एक परीक्षा में ही नियम अनुसार खोला गया है और विलंब के लिए उन्हें अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया जाएगा, किंतु परीक्षार्थी हंगामा करने पर आतुर। संपूर्णतया ऐसा होता है कि देर से प्रश्न पत्र बुकलेट वितरण का बहाना बनाते हुए कुछ परीक्षार्थियों समाप्ति के पूर्व परीक्षा केंद्र से बाहर बुकलेट प्रश्न पत्र एवं OMR शीट आदि नहीं लेकर जाना था, लेकिन कुछ परीक्षार्थियों ने ऐसा कृत्य करते हुए परीक्षा की प्रक्रिया को भंग करने का प्रयास किया। अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा कक्ष में हंगामे के दौरान एक वीक्षक श्री राम इकबाल सिंह को दिल का दौरा पड़ा, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई, लेकिन परीक्षा परिसर के बाहर मुख्य सड़क पर ओल्ड बाईपास को अवांछित तत्वों के द्वारा जाम करने के कारण उन्हें अस्पताल पहुंचाने में विलंब हुआ। सूचना अनुसार उप शिक्षक की मृत्यु भी हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परीक्षार्थी के रूप में कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा में सम्मिलित थे एवं उनका एक ग्रुप परीक्षा में बाहर भी मौजूद था, जो कि बाहर से हंगामा करने पर आतुर। कुछ अभ्यर्थियों ने करने पर आतुर थे ताकि किसी तरह परीक्षा निरस्त हो। अतः जिम्मेदार
परीक्षार्थियों एवं उपद्रवी के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ हत्या का मुकदमा भी दर्ज करने की अनुशंसा की जाती है। इस प्रकरण में कुछ कोचिंग संस्थानों की भूमिका की भी जांच की आवश्यकता है। Then my lordship is concluded. Now, my lord will kindly come to the decision of the Public Commission, which is on page 58. This has not been shown to my lords up till now. None of the petitioners have, my lord, shown this document. दिनांक इतना को आयोजित एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत पटना जिला में अवस्थित परीक्षा इतना बापू परीक्षा परिसर मौर्य विहार कॉलोनी कुमरार में बाधित हुई परीक्षा के आयोग को प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आयोग के निर्णय के संबंध में उपर्युक्त एतद विषय के संबंध में आयोग को अवगत कराया गया कि आयोग द्वारा एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 13/24 को राज्य के 36 जिलों में अवस्थित 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की। इसके अंतर्गत पटना जिला के एक परीक्षा केंद्र संख्या इतना बापू परीक्षा परिषद मौर्य विहार कॉलोनी कुमरार पटना पर कुछ परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र की वितरण से पहले से खुली होने और वितरण के बाद विलंब से प्रारंभ होने की बात कहकर और भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई और परीक्षा बाधित की गई। जिलाधिकारी द्वारा 15/12/24 को विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त समर्पित प्रतिवेदन में प्रश्न पत्र वितरण में 10 से 15 मिनट विलंब होने की बात बताई गई। केंद्राधीक्षक एवं शिक्षकों द्वारा धैर्य पूर्वक बार परीक्षा में भाग लेने अनुरोध किए जाने एवं विलंब के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की बात कहने के बावजूद भी कुछ परीक्षार्थी द्वारा प्रश्न पत्र के टीएस बैग पूर्व से ही फटे होने की बात कहकर प्रश्न पत्र लीक होने संबंधी अफवाह फैलाए जाने के कारण अन्य अभ्यर्थियों द्वारा भी परीक्षा में भाग लेने न करने बुकलेट एवं उपस्थिति पत्रक फाड़ने की बात कही गई। जिलाधिकारी के प्रतिवेदन में परीक्षा प्रारंभ होने में विलंब के लिए निम्न कारणों का उल्लेख किया गया। परीक्षा भूतल के साथ साथ सभी 5 स्थानों पर आयोजित की गई थी। प्रत्येक हॉल में इतने अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था थी। प्रत्येक स्टील बॉक्स में 192 प्रश्न पत्र थे, जिसके कारण तक पहुंचने में विलंब। परीक्षार्थियों द्वारा उनके ही कमरे में सील बॉक्स नहीं खोले जाने पर आपत्ति की जाने लगी। प्रश्न पत्र वितरण को भी बाधित किया गया। आयोग द्वारा परीक्षा बाधित होने के फैक्ट फाइंडिंग के लिए आयोग स्तर पर भी समीक्षा की गई। समीक्षा में जिलाधिकारी पटना द्वारा आयोग को सौंपे रिपोर्ट एवं बापू परीक्षा पर में लगे सीसीटीवी का वीडियो क्लिप को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि उक्त परीक्षा के प्रारंभ में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा को बाधित किया गया एवं अन्य अभ्यर्थियों को भी परीक्षा देने से रोका गया। इसके बावजूद बहुतायत संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कर OMR आंसर शीट को समर्पित किया गया। पूर्ण पीठ को अवगत कराया गया कि वर्तमान मामला 27/12/2021 को आयोजित 66वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के और प्रतिवेदन समर्पित किया था कि परीक्षा केंद्र 660 पर सीट खुला होने तथा परीक्षा 12:30 बजे अपराह्न प्रारंभ होने की शिकायत करते हुए कुछ परीक्षार्थियों वहां फैलाकर परीक्षा को बाधित किया, जिसके कारण अन्य परीक्षार्थी परीक्षा में नहीं दे सके। उस वक्त आयोग ने 2 वरीय उप सचिव की फैक्ट फाइंडिंग समिति का गठन किया गया, जिसने स्थलीय जांच कर अपना प्रतिवेदन जिसकी विस्तृत जानकारी आयोग को आयोजित पूर्ण पीठ की बैठक की कार्रवाई में दी गई, जिससे स्पष्ट होता है कि कथित रूप से सामग्री बांटने में विलंब, सील खुलने रहने की अफवाह फैलाकर कुछ उपद्रवी छात्रों द्वारा शोर मचाकर परीक्षा को बाधित किया गया और अन्य छात्रों को परीक्षा देने से रोका गया। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों
अधिकारी पटना द्वारा समर्पित प्रतिवेदन तथा आयोग स्तर पर की गई समीक्षा क्रम में निम्नांकित देखिए जितने भी लोग देख रहे हैं कुछ कारणों के कारण हमें लाइव बंद करना पड़ा और लाइव हम आ रहे हैं कुछ अलग जगह जहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी ना जुटे हुए हैं, तो उस लाइव में जरूर जुड़िएगा।